Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. I hope all of you are doing well. You must have enjoyed the festive season and you must be recharged enough to start afresh with the civil services preparation. This is a video session on daily news and editorial analysis dated 25th of October. Through this video session, I'll make you understand some of the important news and editorial that would be relevant for the civil services, both prelims and mains. And if you're preparing for state PCS and many other government examination, it will also help you a lot. Now, before I proceed further, those aspirants who are appearing for 2024, the examination for 2024 is scheduled on 26th of May 2024, right? So it's not much time left with you. You need to put your best possible endeavor to ensure that you are clearing prelims examination. Post clearing prelims, you are also going your best with the mains and then final at the interview. To get the first hurdle clear, you need to first clear the prelims examination, and for that you need to practice a good number of questions. Now we at Apti Plus, to help you out in this, we have brought the Nishchay program, that is All India Test Series program, specifically for the aspirant. This will aim and help to conquer the UPSC prelims 2024. Through this program, we are providing 4900 plus questions. Along with that, video discussions will be there, demo test and free magazines for content enrichment. This will definitely help you to build a strong foundation for the prelims examination. If you want to instantly register, you can use this QR code, or even you can register to our website. This is you can get our website, Apti Plus, where you can register yourself to get further details about this course. Now let's get started with the news discussion. So first I'll give you the highlights of the day. First we'll discuss about how the Olympic cities selections are made and how the city are selected. The second important news is about the SIM. We'll see and understand the details and minute about the SIM functioning and the overall changes that has been brought in the SIM technology. The third important news is about the center that has introduced DNA and face matching, and this will be implemented across the country. The second last news talks about the Sri Lanka, which has come up with the free visa for India and many other countries. We'll see the detail to this as well. And we'll conclude the session with editorial that talks about the mitigation strategies or strategies which is there for the Himalayan region. Something very important that will give you an insights about the Himalayas vulnerability and the way forward to it. So without any further ado, let's get started with a detailed discussion one by one. So first, I'll make a discussion on how the Olympics host countries are selected. This is important and vital for your general knowledge purposes also. And from this section also, you can expect a direct question in the prelims examination. Now, the Prime Minister of India, why we are discussing this news, the Prime Minister of India, during an inaugural Indian International Olympic Committee, this is called IOC, in Mumbai, he has categorically said and his willingness that India is looking forward to host Olympic for 2036. There's no official confirmation whether India will be given the host or not, but the willingness from India definitely make it more evident that India is likely to get. Still, there's no confirmation. I'm saying it's likely that India might get, but there's some due process that has to follow before a country is hosted as an Olympic country, right? Now, the other details that you need to know why India has come up with intention. The Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, has publicly declared the intentions to host Olympic for 2026. So preferably by 2026, if everything goes well, India can host the Olympic, which India has never hosted. Now, the Prime Minister has also highlighted his ambitions for the Youth Olympics, which is scheduled for 2029, right? This is a quadrilateral event which is actually scheduled for 2030. 1 year extension has been given. Now, in Asia, there are some countries which has actually made Olympics. अगर उस countries की बात करें कौन कौन से countries ने actual में Olympics conduct किया है, then we have China as one country, then we have South Korea, right? South Korea ने भी host किया है, and Japan. So these countries from Asia has actually made to the Olympics, but in India is lacking on this part. तो India भी चाहती है कि उसे भी Olympic host करने का मौका मिले. We have recently concluded with the G20 summit, which was definitely a successful summit for India. A lot of important alliances and committees were formed
which has made a tremendous progress in the G20. नाउ सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें, हाउ द सिलेक्शन प्रोसेस इज मेड, ये पुरानी अर्स्ट फाइल प्रोसेस है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एक्चुअली मेड अ सिलेक्शन, और इसमें कुछ चेंजेस भी की गई हैं. आई टेल यू द डेट ऑल्सो. Now, earlier the Olympic horse system, which is a horse system by the International Olympic Committee, पहले सबमिशंस की जाती है लेटर ऑफ इंटरेस्ट, जिसे LOI भी कहते हैं. लेटर ऑफ इंटरेस्ट सबमिशंस के बाद उसकी इवेल्युएशंस होती है, एंड वंस द डिटेल क्वेश्चनेयर विच इज देयर, राइट, सपोज यू आर इन एग्जामिनेशन, देयर आर MCQs. For the bidding part, there's a complete questionnaire which has to be evaluated by the International Olympic Committee. Once this is processed, उसके बाद scrutinizations की जाती है, scrutinizations and inspections of the city. Suppose any city of India is selected, then India के कुछ venues होंगे जो shortlist किए जाएंगे, और उसकी scrutinization properly की जाएगी कि वो venue eligible है उस particular organization को host करने के लिए. Now the final decision was made in 7 year in advance. इससे पहले 7 year advance में actually venue decide होती थी, but इस time में changes की गई है. Now they have said within 5 year or 4 year they can come up with the declaration of the host country. The process often lead to overspending, debts, corruption, scandal among the bidders. तो कोई भी ऐसे कंट्रीज में अगर पहले बहुत ज़्यादा कर दी जाए, कोई नई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, तो करप्शन इन्वॉल्व होने की चांसेस होती है. उसको लेकर के बहुत सारे चेंजेस प्रपोज किए गए हैं. आई टेल यू द न्यू अप्रोच. So what is a new approach? See, I mean, when it comes to the part of International Olympic Committee, they have revamped the version of selecting the host country. अगर host country की selections की बात करें, उसमें changes की गई है और mostly 3 aspects पे काम की गई है. First is the flexibility, second is the sustainability, and third is the cost effectiveness. मैं आपको यही briefly बताता हूँ. Flexibility का मतलब है कि ऐसे टेनोर पे सेलेक्ट किया जाए ताकि बहुत ज़्यादा basically they don't give much greater flexibility in deciding the host. So the time has been reduced, the flexibility is given in terms of providing the adequate infrastructure requirement. और जो sustainability की बात है वो इस context में है कि जो infrastructure की development होगी, the infra that will be developed should be sustainable in nature. उसे बाद में भी किसी office purpose के लिए या किसी और event के लिए use किया जा सके. And cost effectiveness means that how effective it has been built, right? तो IOC ने कहा है कि जो 2036 की एडिशंस होनी है उसके लिए डिक्लेरेशन 2030 में होगी, और ये 2 स्टेज की प्रोसेस होगी. फर्स्ट इज अ कंटिन्यूअस डायलॉग प्रोसेस एंड द अदर इज अ टारगेटेड डायलॉग प्रोसेस विदाउट एनी फिक्स्ड डेडलाइन टू एसेस एंड डिस्कस द गाइडलाइन पोटेंशियल. तो ये कुछ नए अप्रोचेस के साथ जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी है, दे हैव कम विद द रिवैम्प्ड वर्जन. और 3 पॉइंट दैट यू हैव टू नोट, द फर्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी, सेकंड इज सस्टेनेबिलिटी, एंड थर्ड इज द कॉस्ट इफेक्टिवनेस. ना उसके लिए आपको ये जानना जरूरी होगा दैट विच इज द एक्चुअल कंट्री दे हैव कंडक्टेड द ओलंपिक्स. सो दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी वाइटल फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दैट विल बी अपेयरिंग फॉर. कई बार डायरेक्टली वेन्यू और नेम पूछे जाते हैं. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर द रिविजन पर्पसेस. बार्सिलोना में 1992, अटलांटिका 1996, सिडनी 2000, देन वी हैव एथेंस इन 2004, बीजिंग ने किया था 2008 में, लंदन 2012, रियो 2016 and Tokyo 2020, right? So this was the event that was there. There are other things that is evolved. Let's see whether India ने जो अपनी willingness दिखाई है 2036 के लिए, India is getting that bid or not. If we get, it's a proud moment for us that India will be hosting Olympic for the first ever time. Now potential bidders की बात करें, not only इंडिया के साथ साथ और भी ऐसे कई potential bidders हैं जिन्होंने एशियन गेम्स 2036 आई मीन ओलंपिक गेम्स के लिए बिड किया है. सो विच आर दैट कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम इंडिया? द इंटरेस्ट वाज आल्सो शोन बाय मेक्सिको, इंडोनेशिया, टर्की एंड पोलैंड. ये कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी विलिंग्स दिखाई है फॉर 2036 ओलंपिक्स, राइट? नाउ इंडिया हैज येट टू डिसाइड ऑन द सिटीज. इंडिया ने अभी अपनी सिटीज को आइडेंटिफाई नहीं किया है दैट इन विच सिटीज विल बी एक्चुअली कंडक्टिंग. एंड मेक्सिको इज द ओनली वन दैट हैज previously conducted the part in 1968 में मेक्सिको ने पहले भी होस्ट किया हुआ है. अदर पोटेंशियल बिडर्स की बात करें, द फर्स्ट इज इजिप्ट, देन सियोल, चाइना, कतर, हंगरी, इटली, डेनमार्क, कनाडा एंड जर्मनी. सो दीज आर द पोटेंशियल बिडर्स. ये भी बिडर्स कंट्री हैं जो कि बिड करेंगे फॉर 2036 ओलंपिक. एंड वाइल कतर इज एक्चुअली होस्टिंग अ ग्रेट इवेंट दिस post COVID,
उन्होंने वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया 2022 में, और एशियन गेम्स की अगर बात करें दैट इज शेड्यूल्ड फॉर 2030 in Qatar. So they have a massive infrastructure development, and even the stadium which is built will be something that will be used sustainability. बहुत सारे ऐसे इवेंट्स के लिए बाद में भी उसे यूटिलाइज की जा सकती है. Now, sustainability and cost effectiveness. I have already talked about this, but I'll brief you more about this. See, main कोशिश ये है कि जो sustainability की बात है वो ऐसी हो ताकि बाद में उसकी utilization हो. जो भी amount expenses होंगी, the expenses which will be made should be used potentially. Post अगर जो game हो रही है, game के ओवर होने के बाद उसे बाद में भी यूटिलाइज किया जा सके, राइट. द न्यू कंस्ट्रक्शन मस्ट बी अलाइन विद द डेवलपमेंट प्लान्स, और लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए उसे बनाने की जरूरत है, राइट. एडिशनली जो 2030 की ओलंपिक्स है उसमें वो भी असाइन की गई है दैट क्लाइमेट पॉजिटिव कमिटमेंट होनी चाहिए. इट शुड बी सस्टेनेबल. दिस इज व्हाट द सस्टेनेबल टर्म्स हियर मीन. इट मीन्स बाय इट्स यूजिबिलिटी एंड इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी. और इसमें एम्फेसिस दी है IOC ने दैट 80% रिडक्शंस इन द बिड विल बी देयर फॉर 2026 विंटर गेम्स. और IOC ने असिस्ट किया है कि जो मार्केटिंग है, इवन वेन्यू डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, उसके लिए वो खुद भी असिस्ट करेंगे ताकि जो कॉस्ट कटिंग है वो की जा सके. सो दिस इज हाउ IOC, that is International Olympic Committee, is assisting the member countries, the host country, to get further process done. Now, moving ahead with the other news, that is SIM card understanding and its function. You can find this news from the text and context page of the Hindu, where we'll see the components of the SIM card, functions और क्या working है, किस तरह से SIM card evolve हुई है और आज के डेट में हम eSIM भी use कर रहे हैं. Right now, first and foremost about SIM card, I'll give you the brief about SIM card. How does it work? सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है that what does the SIM card stand for? It stand for subscriber identification module. It's important for many other government examination. आपसे ये डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं. स्पेसिफिकली एक इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, we call it IC, right? माइक्रोचिप आइडेंटिफाई करती है उस पर्टिकुलर सब्सक्राइबर और नेटवर्क की, राइट. नाउ ग्लोबल मोबाइल फोन नेटवर्क कम्युनिकेशंस जो हैं वो एक ग्लोबल सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज GPS, दैट इज ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस, जिसमें सिम कार्ड मैंडेटरी होती है, राइट. सिम कार्ड अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है. वी हैव स्टैंडर्ड माइक सिम विच इज यूज्ड इन अ बेसिक्स फोन, देन वी हैव नॉर्मल सिम विच इज यूज्ड इन स्मार्टफोन मोस्टली, और माइक्रो और नैनो सिम्स भी यूज किए जा रहे हैं आज के स्मार्टफोन्स में, राइट. नाउ सिम कार्ड कौन कौन से ऐसे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है, एक सिम कार्ड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है. फर्स्ट, इट हैज ओन ID नंबर दैट इज स्टोर्ड. देन वी हैव IMSI नंबर, फोन के लिए IMEI नंबर होती है, जो कि हर एक फोन के लिए यूनिक होती है. देन वी हैव सब्सक्राइबर लोकेलिटी आइडेंटिफिकेशन एरिया, लिस्ट ऑफ प्रेफर्ड नेटवर्क, इमरजेंसी नंबर जो कि एम्बेडेड होती है लाइक 101, 102, 113. these are the emergency number that is there, right. सब्सक्राइबर की कॉन्टैक्ट्स एक सिम में एम्बेडेड होती है, और उसके साथ साथ जो SMS आप रिसीव करते हैं दैट इज देयर इन योर सिम. सो यू कैन इवन इन द स्मार्टफोन इट हैज अ ऑप्शन दैट यू कैन गो फॉर स्टोरेज ऑल्सो, बट अर्लियर जो बेसिक्स फोन होते थे उसमें सिम कार्ड में ही मैसेजेस स्टोर होते थे. नाउ हाउ डज अ सिम कार्ड एक्चुअली वर्क, क्या क्या फंक्शनैलिटी है उसके पीछे, वी नीड टू अंडरस्टैंड. सिम कार्ड adhere to ISO or OIA 7816 international standard. You can just check out this. And overseas by the International Organization for Standard, जिसे ISO भी कहते हैं, right? And they have International Electronic Commissions जो कि regulate करती है सारे process को. These standards are applicable on electronic cards including the smart cards, right? And the network side, SIM card help to establish with the cellular network. Suppose a phone is there which is intact with the SIM and a network which is there, so it help to establish the network, and it will, there's some range which is actually assigned by the network area upon which your the proximity area, the network area will work with a proper length, and the अगर कुछ एरियाज दूर हैं तो कुछ नेटवर्क की कई बार लिंकेज या सिग्नल्स में भी प्रॉब्लम्स आती है. Now, what is an eSIM? I mean, this has become familiarity after the launch of iPhone and many other smartphone. Basically, iPhone और smartphone में ये आप use कर सकते हैं. Samsung के phones में it's not applicable as of now. You need to be updated, but I'm sure that iPhone
और गूगल के जो फ़ोन है पिक्सल्स उसमें ये यूज़ कर सकते हैं, आप गूगल के पिक्सल्स वाले फ़ोन्स में यूज़ कर सकते हैं. iPhone 13 सीरीज ऑनवर्ड्स यू कैन यूज़ eSIM, राइट. सो ओवर द टाइम द थिंग हैज़ इवॉल्व, और इवॉल्वमेंट के बाद eSIM की एक नई टेक्नोलॉजी आई है जो कि स्टैंडर्ड सिम से काफ़ी अलग है. द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज प्रोग्राम्ड एज eSIM and this is defined by the GSM Association. And eSIM is a software embedded UICC. What is UICC? This is Universal Integrated Circuit Card, जो कि मैन्युफैक्चरर्स प्रोसेस करते हैं. इसमें किसी भी तरह की फिजिकल सिम यूज नहीं की जाती है. देयर इज नो फिजिकल सिम दैट इज यूज्ड. Now, one thing that is important for you to know that how does the eSIM actually benefit? क्या क्या इसके significance है, क्या क्या advantages हैं. तो two immediate advantages की अगर बात करें, first it is considered as environment friendly. Why? Because जो plastics use होती हैं एक normal sims में, वो plastic यहाँ पे use नहीं होती है, and there is only software that is working. और जो malicious gains हो सकती हैं एक फ़ोन के थ्रू, उसमें भी काफ़ी हद तक duplications और exemptions में मदद मिलती है, right? Now, what are the other significant advantages of the using eSIM? First, it has a worldwide coverage. Device is further proof connected. No SIM swap cost is additionally you have to pay. Seamless logistic management, improve the spread, bring to market, and increase scalability and security. But इंडिया में अभी भी सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए इस सिम में कुछ डिसएडवांटेजेस भी लाए गए, जहाँ पे हैकिंग के बाद the hackers can even use it for unintentional purpose. थोड़े डाउनसाइड भी है, but mostly it has a positive side to it. Now, moving ahead, other news that is Center to introduce DNA face matching system. एक ambitious steps लेते हुए यूनियन गवर्नमेंट ने, the central government has actually said that they will roll out DNA and facial recognition system for 1300 police station across the country. We are not sure कि how DNA process will actually work, but अगर फेस रिकॉग्निशंस की बात करें तो ये प्रॉपरली वर्क करेगी पूरे इंडिया में सारे पुलिस स्टेशंस में. Now, इसकी implementations की अगर बात करें, the introductions of DNA and face matching was actually come up with the CPIA, that is the Criminal Procedure for Identification Act 2022 में ये बिल लाई गई थी, जहाँ पे एक पुराने 100 ईयर ओल्ड जो प्रिजन एक्ट है उसको रिप्लेस किया था गवर्नमेंट, राइट. एंड थ्रू दिस लॉ द सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी विल कलेक्ट what they can do. First, they can collect the information, they can store the information, and they can analyze the information for the biological samples like retina, iris scan, जो कि सेम आप आधार में कराते हैं, राइट. जो आधार में चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, और ये सारी डेटा NCRB के पास रिकॉर्ड रखी जाएंगी with the basic SOP, that is standard operating procedures. Now, nodal agencies कौन इसमें ऑपरेट करेंगी, how it will work? As I've told you that NCRB, National Crime Record Bureau, जो कि एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, that will be tasked with the storage. I mean storage की पूरी जिम्मेवारी NCRB की होगी, and they will be analyzing. एक further SOPs will be created. SOP is the standard operating procedures for the public official, and Union Home Ministry will have to constitute a domain committee which will successfully look into the implementations, right. जितने भी स्टेट पुलिस है, सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, और जो की स्टेक होल्डर्स हैं, उनके बीच में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, राइट, MHA will actually make a coordinations to that, right. So this is how the thing will function. Now, moving ahead, that the Sri Lanka has approved tourist visa for visitor. This is something which Sri Lanka is looking forward for the part of reviving their tourism sector, which contributes Sri Lanka is substantially ambitious, to this fun, country's fierce, GDP में बहुत अहम fabulous, रोल है. free-spirited, Sri Lanka के कैबिनेट ने अप्रूव किया है free connecting, tourist visa. soaring इंडिया के women. साथ-साथ Sri और Lanka countries is को भी free fierce, visa allowed curious, free full as of the countries action, Russia, passion, China, fusion, fashion, Thailand, vision. Malaysia, She means Indonesia, business. and Japan. She is So these are the determination, countries जिनको free timeless, visa full of given kindness, to them. luxury. Now, pilot program actually Sri Lanka ने start किया, the PP program. This is something which Sri Lankan Foreign Ministry has announced, and they have said this pilot program will be extended till 31st 2024. 2024 तक इसे extend की गई है. No, see, I mean December till Jan is a time where festive season. In Christmas, most people actually travel to Sri Lanka, और कई ऐसे फेस्टिव टाइम है न्यू ईयर के टाइम में जहाँ पे फेस्टिव सीजन को देखते हुए 2024 तक एक्सटेंड की गई.
The move aimed at reviving the part of country fleeting tourism industry, और मैंने आपको बताया tourism substantially contribute करती है श्रीलंका के economy में, right? Now the tourist 7 countries that have been allowed, I have already named the country, and to make the part of the general, अगर 5 billion analysis में अगर देखें तो arrival actually anticipated है that 5 billion people will actually arrive Sri Lanka by 2026. नाउ इंडियन टूरिस्ट कितने जाते हैं, और जो पूरी टूरिज्म है उसमें इंडिया का काफ़ी अहम रोल है. इंडिया हैज़ टॉप द रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल टूरिस्ट. सो इनबाउंड टूरिज्म मार्केट में फॉलोड बाय चाइना. चाइना इज द सेकंड कंट्री. आई विल टेल यू द रैंकिंग ऑल्सो. As per the data by the Sri Lankan Tourism Department, India has the largest source of tourism, जहाँ पे almost 2,310 arrivals हुए हैं, और रशिया ने 1,32,000 के आसपास किया. In September, India has topped over with 30,000 visitors, marking 26% of the arrival, and China has 8,000, right? Now, if you look at the data, the पूरी data की बात करें, total arrival कौन कौन से country से हैं. So India ranked first, then we have China as a follow-up, then United Kingdom, Germany, France, Australia, Maldives, Russia, United States of America, and Netherlands. So these data are authentic, जो कि श्रीलंका टूरिज्म डिपार्टमेंट अथॉरिटी से ली गई. Now, reason for deteriorating tourism, I mean something has happened with Sri Lanka. अगर बात करें 2019 की ईस्टर संडे जो कि अगेन दिसंबर में हुई थी, इस टाइम पे काफ़ी डेथ रिपोर्ट की गई थी बमिंग के बाद. काफ़ी ऐसी टूरिज्म है जो वहाँ पे डेटोरेट की है. कोविड-19 पेंडेमिक वाज समथिंग नेचुरल विच हैज़ डेटोरेटेड अ लॉट ऑफ टूरिज्म इन द रीजन. उसके बाद 2022 की जो फिनेंशियल क्राइसिस है मास प्रोसेस्ड हुई थी. कई ऐसे एसेंशियल आइटम्स थे वे पीपल वर नॉट एबल टू अफोर्ड इट. फ्यूल्स वर सो हाई, मिल्क, एग्स, सो आइटम वर सो हाई, रिसेशन वर सो हाई, इन्फ्लेशन रेट ऑलमोस्ट 56% तक बढ़ चुके थे. तो ये कुछ ऐसी रीजन थे जहाँ पे श्रीलंका की टूरिज्म, आई मीन टूरिज्म हैज़ एक्चुअली बीन डेटोरेटेड, और ये रिवाइवल के लिए अब जो फ्री वीज़ा मिली है वो बहुत हद तक मदद करेगी. Now, moving ahead with the editorial for the day, that is mitigating tragedy in the Himalayan region. We'll see how the best things can be done about the Himalayan region, specifically जो glacial outburst है, rain है, उसको देखते हुए. So what I'll be discussing, we'll see the early warning system, susceptibility of the Himalayan region, mitigating the GLOFs, and the part of multidisciplinary efforts. Now, GLF की अगर बात करें, this stand for the glacial lake outburst flood, which we have recently seen in Sikkim, that has caused significant damage along the Teesta River, that has highlighted and escalated the threat, which has introduced the GLF in Himalayan region. मैंने आपसे इंडियन हिमालयन रीजन के बारे में पहले भी डिस्कस किया है रिगार्डिंग द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस एंड द सस्टेनेबिलिटी विच इज देयर. सो यू कैन एक्सपेक्ट कि इंडियन हिमालयन रीजन में मेंस में आपसे एक सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे. सो यू नीड टू प्रिपेयर द कंटेंट अकॉर्डिंगली. एक पब्लिश की गई थी इंपॉर्टेंट जर्नल में नेचर, that has said that 90 million people and from 30 countries which is adjoining the 1089 basin with the glacial lake are also susceptible to the part of glacial lake outburst, जिसे GLOF भी कहते हैं. Now, among the 1/6 that live 50 km on the glacial lake has and 1 kilometer potential runout जो channels में है, उन populations भी, वो population भी काफ़ी ज़्यादा vulnerable है इस तरह के glacial lake outburst floods. Now, what is glacial lake outburst? आपको समझने के लिए you need to check this part of the images. So this is the landslide, this is avalanches, this is glacial lake, और further ये तीनों contribute करते हैं flood में, and this reach out to the the habitat, the people, the locality which is living in the region. Now, early warning system has actually helped इस tragedy को बताने के लिए, बचाने में, and even preventive measures. South Luhan Glacial Lake in Sikkim still is unfolding. In September, जो National Disaster Management Authority है, उन्होंने installed किया है automated cameras, monitoring equipments, aiding the weather transmission. So NDMA के efforts के बाद कुछ चीजें improve हुई हैं, but we need to improve a lot. Mission identification spot and sensor suggestion mitigations like small check dams and future early warning system is that has been put in place, but we need to mandatorily work upon it. इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और NDMC की प्रॉपर कोऑर्डिनेशंस की जरूरत पड़ेगी. NDMA, दैट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी.
Now, susceptibility in the Himalayan region. I mean, this is susceptible because of the Himalayan or hydrometeorological tectonic climb, human-induced mountain hazards which is there. Each of them require extensive monitoring, mitigations, and early warning strategy, which is put in place by the NDMA. Right? The process of chain glacial melting is adequately mapped और कई ऐसे river basins हैं like Indus, Ganga, Brahmaputra that have almost 28,000 glacial lakes. Out of this, 27% are in India and 6 state and union territory comprises. Now, mitigation of GLOF की अगर बात करें जो ग्लेशियल लेक आउटब्रेस्ट फ्लड है उसके लिए क्या मिटिगेशन स्ट्रैटेजी हमें अपनाने की जरूरत है एंड हाउ यू कैन मिटिगेट दैट यू कैन राइट दिस इन द मेंस एज वेल आप ये मेंस में पॉइंट लिख सकते हैं फर्स्ट वी नीड टू हैव एन excavating channel for regulating discharge. This is the one way out. The second way is that draining uses the pipe and pumps. This is the second. Third is a spillway constructions. And fourth, this is last but not least, that is setting up a small catchment dams to cut the speed of the outflow. जो speed है उसे कम किया जा सके with the catchment dams. Now, multidisciplinary effort is required. So this is a part of conclusion that you can say. And the mitigation strategy that would be required. बहुत सारे ऐसे institutions हैं उनकी collaborative efforts, the multi-stakeholders would be required to give their inputs regarding this to how we can manage and even monitor it. जो National Remote Sensing Center है उन्होंने atlas release की है to have a remote sensing details monitoring the spatial changes. The Central Water Commission, which is also known as CWC, is conducting the hydrodynamic assessment जो high risk lakes हैं मैप्ड वाटर फ्लो हाइट एंड रूटीन सिमुलेशन दी जाती है ताकि एक डिजिटल इवैल्यूएशन मॉडल क्रिएट की जा सके एंड वी शुड हैव अ प्रिवेंटिव मेजर्स इन दिस रिगार्ड राइट एंड इंस्टीट्यूशनल अवेयरनेस एंड रिस्क इंक्रीजिंग बट चैलेंजिंग टू इवॉल्व द पार्ट ऑफ मिटिगेशंस to provide risk and early warning system working in a healthy manner. So this is how we can mitigate to a larger extent preventing the part of Indian Himalayan region और भी कुछ ऐसे रीजन जो सब्सिस्टिबिटल है ग्लेशियल आउटबर्स्ट है उन्हें बचाया जा सकता है. Now answers and discussion to the questions that we have discussed on 20th. We'll discuss the answers to that particular question. The first, the correct option is D, that is hybrid seed के बारे में मैंने आपसे पूछा था इसके correct options D हैं और first statement is correct that the hybrid seed is produced by the cross pollinations by different varieties. Now the second statement is also correct that they are often grown in herbarium seeds. The third statement is also correct that they are chosen for a characteristic which has been great uniformity and the disease resistance. Now for second question also we have correct option that is D. National Aeronautical and Space Organization has announced the part of Calpiso mission and आपसे Calpiso missions के बारे में पूछा तो this is something which has worked out right और इसके जो statement है 17 years span for lidar measurement and creation for 100 square study is incorrect. So check out what you have actually mapped और detailed explanation आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं. Now daily MCQs आज के कुछ सवाल जो आपके prelims के लिए काफी ज़्यादा relevant होंगे. The first question is about the reference to Mount Kun. This is a tectonic force with a glacial activity million of years that has shifted. It extends across the countries including India. It has a crucial root in the ancient check. आप चेक करें इसके कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं whether A, B, C or D and you can accordingly mark the correct answer in the comment section down below. The second question of the day is about the OMO, that is open market operations के बारे में आपको बताना है. It's a crucial for maintaining the desired level of liquidity in the market. It influences the rate as well as the country exchange. तो बताएं कौन सा ऑप्शंस करेक्ट हैं A, B, C या फिर D. आप करेक्ट ऑप्शन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं. We'll accordingly figure out how many of you have actually marked the correct option और उसे इस डिस्कशंस में उनके नाम भी बताए जाएंगे जिन बच्चों ने करेक्ट ऑप्शंस दिए हों. So this was all about for the daily news and editorial analysis followed by the MCQ questions. If you have any other queries about program, test series, admissions and courses, you can reach out to us. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching. Thank you for staying connected.